Hello everyone, welcome back to Super Kalam. Finally, four core papers are over GS paper 1 to GS paper 4. ऐसे का पेपर भी खत्म हो गया है and we have analyzed all the papers except for GS paper 4 which we are going to analyze right away. Okay? तो मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया to analyze the papers yourself as well through the help of the classes that I have taken. I hope that you've understood how UPSC is thinking when it is setting questions this time and how important current affairs are. सेपरेट एक क्लास भी मैं लूंगी जिसके अंदर आई विल टेल यू कि करंट अफेयर्स में भी व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग यू टू रीड, what UPSC is expecting you to interlink to understand. I'm going to take a class on it very soon. Okay, so let's start with analysis of the GS paper 4. First, let's do a quick analysis कि how many questions from which area were asked this year. If you can see over here, यहाँ पर अगर आप देखो, you will notice that 30% of the paper was case studies based. Applied ethics, that means whatever you have understood in ethics, how you apply it. 20% of the questions were contemporary ethical issues which were asked. We are going to discuss questions as well, don't worry. 20% of the paper was on ethical theory and thinkers, and 30% of the paper of the questions reflected governance and civil service values. तो दिस इज द क्विक एनालिसिस कि कितने परसेंट क्वेश्चंस कहाँ से आए. व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज, देर आर बेसिक रिसोर्सेज. अगर आपके पास लेक्सिकन की बुक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने केस स्टडीज प्रिपेयर करने के लिए, थ्योरेटिकल एथिक्स कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो एक तो आपकी हो गई. फर्स्ट सोर्स वुड बी द स्टैंडर्ड बुक्स दैट यू आर स्टडिंग. देन नेक्स्ट सोर्स वुड बी न्यूज़ पेपर्स. I have always said this. If you are studying current affairs from magazines, okay, there is no problem in that. If you are revising current affairs on a monthly basis from monthly current affair magazine, don't, no problem. That is very good for prelims. But this time and every year, mains UPSC, basically gives us direct hint that for mains, just going through the current affair magazine will not be sufficient. You have to read the newspapers on a daily basis. You have to start interlinking what you are reading with what you are studying in the books or in the classes. You have to read the editorials to understand how to look at a particular situation. किसी भी सिचुएशन, किसी भी टॉपिक को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, वो एडिटोरियल से सीखने को मिलता है. एंड दिस इज द सेम थिंग विच हेल्प्स यू इन मेंस, विच हेल्प्स यू इन एसे पेपर, विच हेल्प्स यू इन पर्सनालिटी इंटरव्यू राउंड. प्रीलिम्स के लिए मैगजीन्स आर वेरी गुड. करंट अफेयर मैगजीन प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है. बट फॉर मेंस, फॉर आंसर राइटिंग, फॉर इंटरव्यू, यू शुड नो हाउ टू एनालाइज. अगर आप डीप थिंकर ही नहीं हो, एनालिटिकल ही नहीं हो, चीज़ों को इंटर रिलेट ही नहीं कर पाते, नहीं समझ पा रहे हो कि मैं ये जो न्यूज़ में चीज़ आई है इसको मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, कैसे रिलेट कर सकता हूँ जो बुक में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे. what kind of solution can I give to this problem in the society? How can I execute that solution? Theoretical solution नहीं, applied solution देना है, something that can be executed. For all of that, you have to read the newspapers daily. I'll show you questions even in the ethics paper which are trying to open up your mind कि पढ़ लो newspaper daily, पढ़ लो. नहीं पढ़ते हैं. 90% students are not reading newspaper. This is so painful for me as a teacher. मैं सिर्फ बोल सकती हूँ आप लोगों को. I can just say, I can just tell you, advise you, recommend you, suggest you, read the newspaper daily. But if you're not doing it, I cannot spoon feed you. मेरी यही लिमिटेशन है, यही मुझे सबसे ज़्यादा पेन दे रहा है इस वक्त. मेरी आवाज़ में आपको दिख रहा होगा. एंड इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, ये भी एक एक्सक्यूज मान लिया आपका, भाई आता ही नहीं है पढ़ना, मान लिया एक्सक्यूज. आई कैन एक्सेप्ट दैट एक्सक्यूज, नहीं आता. बट देन एट सुपर कलाम वी आर गिविंग यू डेली करंट अफेयर एनालिसिस, डेली, इवन ऑन संडेज. उसको पढ़ के समझना भी अब प्रॉब्लम में है. अगर प्रॉब्लम की बात है तो मुझे बता दो, बिकॉज दैट विल नॉट बी एडमिटेड एज एन एक्सक्यूज. Here you will find every day, even the editorials are covered. Over here, see, even the editorials are being covered. And still, if you are not reading the newspapers every day on a daily basis, if you are not reading the important article, see, this was in news. ये तो कितना शोर मचा है इस आर्टिकल, इस पर्टिकुलर एक्ट का, इस पर्टिकुलर बिल का. If you're not reading them, not trying to interlink, not trying to be consistent in understanding the current affairs, then दैट वुड बी माई लिमिटेशन. उससे आगे मैं गाइड नहीं कर पाऊंगी. फिर वो आपकी, आपने अपने हाथ में ओनरशिप ली है देन. ठीक है, सो वॉट आई कैन डू इज आई कैन मेक योर जर्नी ईजी बाय टेलिंग यू वॉट टू डू, बट एक्चुअल वर्क यू विल हैव टू डू, राइट.
एक्चुअल काम तो खुद को आप ही को करना है ना, और कोई तो नहीं करेगा आपकी तरफ से आके. इफ आई कुड स्टडी ऑन योर बिहाफ एंड गिव द एग्जाम, आई कुड हैव डन दैट. वो नहीं किया जा सकता, वो आप ही को करना है. चलो, एनीवेज, लेट्स मूव अहेड. फर्स्ट लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर. Okay, look at the question paper over here. There are two sections. Section A is theoretical ethics, and then we have section B, which is about case studies. Section A, question number 1 के दो parts हैं. In the present digital age, social media has revolutionized our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Social media, it was very much expected कि social media से एक question आए ही आए. Now it has revolutionized the way we talk, the way we interact, but इसमें ethical issues भी हैं, challenges भी हैं. So the examiner wants you to answer 10 key ethical dilemmas in this regard, the ethical issues and challenges. 10 ऐसे issues and challenges, dilemmas आपको highlight करने हैं. Okay? Constitutional morality के ऊपर again question आ गया. It was again in GS paper 2, again in ethics. That means constitutional morality is a very hot topic for UPSC now. ठीक है? तो if you are preparing for UPSC 2026, make sure that you prepare this term. इस टर्म को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. There are high chances in prelims they can ask you. Basically, ethics का जो पेपर था ना, that was a balanced paper because it leaned towards the practical governance rather than leaning towards the philosophical side. आपके अप्लाइड एथिक्स को टेस्ट किया है. कैसे? लेट अस शो यू. हियर फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज टेस्टिंग योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया के क्या एथिकल इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो आपको डिलेमास को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है. यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एज वेल. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ओवर हियर. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन on Karl von Clausewitz. Once said, war is diplomacy by other means. Again, because right now we are dealing with a lot of things, including one of the wars in the past. अभी हमने देखा था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में what was going on. So over here you can see that questions were ethically linked. आप अप्लाई कर रहे हो, जो आप थ्योरीज, जो कोटेशंस, जो आप थिंकर्स को पढ़ते हो ना थ्योरी में, whatever thinkers and quotations you are reading, how you are going to apply it, that has been tested. Critically analyze the above statement. Critically analyze. They are not asking you to analyze. Critically, pros and cons, right? In the present context of contemporary geopolitical conflict, see over here, direct application. Direct application hai. And again, current affair oriented, right? Another important aspect, अगर आप यहाँ देखोगे, keeping the national security in mind. Examine the ethical dilemmas related to controversies over environmental clearance of development projects. चार धाम यात्रा, right, न्यूज में रहती है. Again, here also you will see pure theoretical ethics has not been asked this time by UPSC. नहीं पूछा गया है theoretical. They are now testing कि whatever you are studying in theory, are you able to apply it? आपकी लर्निंग्स ही रह जाती हैं अगर आप उसको एग्जीक्यूट ना कर पाओ या अप्लाई ना कर पाओ. यूपीएससी अप्लाई ही करवा रहा है. एंड इवन इन केस स्टडीज इफ यू सी, चलो मैं सेक्शन बी भी दिखा देती हूँ. दे वर टफर देन लास्ट ईयर. दे वर कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, विजय इज द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. For last 2 years, he has been in this region in Himachal Pradesh. In the month of August, heavy rains lashed the complete state. Then there were cloud bursts. See, recently cloud bursts were seen, right? Cloud burst tha. In the upper reaches of said district, damage was very heavy. Complete state में damage था. Complete road network and telecommunication were disrupted. Buildings were damaged. People's house have been destroyed, and they were forced to stay in open. Now, the civil administration under Vijay got activated. They started conducting the rescue and relief operations. Temporary shelter camps were created. Temporary hospitals were created to provide shelter and medical facilities. Helicopter services were presented. Right? Vijay got a message from his hometown in Kerala that his mother was seriously sick. See, dilemma number 1. He is on active duty right now over here, but his personal life is also getting affected here because his mother is sick. He gets the news. After 2 days, Vijay received the unfortunate message that his mother has expired. विजय का कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है एक्सेप्ट द एल्डर सिस्टर जो अभी यूएस में है.
इन द मीन टाइम सिचुएशन इन द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट डेटीरियोरेटेड फर्दर। सी किस तरीके का आप देख रहे हो, दुविधा है यहाँ पर। दिस इज अ डिलेमा, वेरी मेंटल, heavy mental pressure on Vijay's mind. Now the question is, what are the options available with Vijay? बहुत ही messy situation है ये. These are not black or white case studies. They force you to show balance, process, and decision making, not just moral preaching. So I would say case studies moderate to high थी toughness level में, right? This is very important because here there is dilemma between disaster duty versus family. ये है dilemma जो विजय फेस कर रहा है. This is the dilemma that Vijay was facing, right? I would say this question paper forced you to think. इसने फोर्स किया है सोचने पर. हम क्या करते हैं, we just focus on rote learning, but actually UPSC is asking us, do not rote learn, focus on thinking. Conceptual clarity is tested through governance linkages. For example, question on, यहाँ पर देखो, constitutional morality has been asked. सोशल मीडिया डिलेमास पूछे गए हैं. महावीर जी की टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन है, राइट? जैनिज्म के ऊपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दिस वन. व्हाट आर द मेजर टीचिंग्स ऑफ महावीर, एक्सप्लेन द रेलेवेंस इन कंटेम्पररी वर्ल्ड. मेजर टीचिंग्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आर्ट एंड कल्चर आल्सो, बट टू कनेक्ट इट विद द कंटेम्पररी वर्ल्ड इन टुडेज टाइम, हाउ यू कैन फाइंड इट्स रेलेवेंस, हाउ यू कैन फाइंड इट्स इंपॉर्टेंस, उसका यूजफुलनेस, वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. Then quotes were not abstract philosophy over here. बहुत ही important quote based question. यहाँ तो सब लोग, सब students, they got clean bold over here. There was a very important quote given by Thiruvalluvar. Those who in trouble untroubled are will trouble itself. Those who in trouble untroubled are, यानी कि जो मुसीबत में भी डगमगाए नहीं. Those who in trouble are untroubled, जो मुसीबत में भी ना डगमगाए. Those who are untouched by the trouble will trouble itself. That means the trouble is going to trouble its own self, right? Instead of the person who is actually standing in the trouble, because that person is showing resilience under stress. Resilience. अगर आप मुसीबत में भी एकदम स्ट्रांग होकर खड़े रहो ना, तो मुसीबत भी खुद को ही परेशान करेगी और उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगी. मुसीबत खुद परेशानी में पड़ जाएगी, राइट? द ट्रबल इज गोइंग टू बिकम ट्रबल्ड इटसेल्फ इफ इट इज नॉट एबल टू टच यू, if it is not able to disturb your peace of mind. That was the quote. So explaining this, these are not abstract philosophy, straightforward question hai yaar. Quotes equals to values equals to example. This is something, as a teacher I would rate section A scoring if prepared well. Difficulty level में section A का 3 out of 5 दूंगी, right? Because the examiner will reward structured example rich answers, not the lengthy answers over here. And over here in case studies, ये तो disaster, please write it down. It was a case of disaster duty versus family. Disaster duty versus family. Next case study over here, question number 8. It was on, write it down, environmental justice versus welfare. Because this is a classic case study on balancing. UPSC is signaling that civil servant must innovate middle path solutions, not take extreme stances. Similarly, if we go to question number 9, question number 10, and question number 11, these were the case studies on integrity under pressure. These are the themes that you prepare in ethics. इसी के ऊपर case studies पूछी गई हैं. About nepotism, procured splitting, Magnarega fraud, all are day-to-day IAS IPS realities. They check if you can uphold probity while documenting, escalating and safeguarding yourself legally. Probity की definition तो पढ़ लेते हो, how to apply it. These are the case studies which will tell you how to apply probity. And do you know, question number 12 case study is one of my favorites. Question number 12 की जो case study है ना, ये मेरी favorite case study आई है इस बार. This case study is on, write it down, refugee crisis with armed soldiers. With armed soldiers. Brilliant case. It blends humanitarian ethics plus security plus international law. अगर आपने रोट लर्निंग की है, आप इस केस स्टडी में स्टक हो जाओगे. Only a person, only a student who has strategically prepared ethics, who knows the SOPs, proportionality, stakeholder mapping is going to shine in this particular case study.
सो आई वुड रेट सेक्शन बी 4 out of 5 इन डिफिकल्टी लेवल. ओके, जिन्होंने रिहर्स किया है ना, थॉट प्रोवोकिंग तरीके से एथिक्स को पढ़ा है, दे वुड हैव लव्ड दिस क्वेश्चन पेपर. ओके, स्कोरिंग पोटेंशियल था इस पेपर के अंदर, बाय द वे, राइट. सो माय टेक अवे इज दिस वाज अ फेयर पेपर विच रिवॉर्ड्स प्रैक्टिकल, बैलेंस्ड, एग्जाम्पल रिच आंसर्स. वही एग्जैक्ट क्वालिटीज हैं जो यूपीएससी को चाहिए एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट में. एंड एज यू ऑल नो दैट on mains PYQs, the model answers of this year's question papers have been made live. Paper 1, paper 2, paper 3 and even paper 4. तो आप यहाँ पर देखोगे सारे मॉडल आंसर्स यहाँ पर लाइव हैं, इवन इंक्लूडिंग द केस स्टडीज. तो इस केस स्टडी को कैसे अप्रोच करना है, with diagrams, with flowcharts that you require, and how to approach these case studies, everything is listed here and it's free. आप लोग access कर सकते हो. The link is given in the description box. Now out of all these case studies, you have to tell me in the comment section which case study you could easily crack, you could easily answer. ठीक है, ये आप मुझे बताओगे comment section में.